In this video, we'll discuss the difference between scalar field and vector field. आमे स्केलार फील्ड और वेक्टर फील्ड विषय कहीं जाना कहीं आम जो ग्रेडिएंट और डाइवर्जेंस पढ़ुचे आम ग्रेडिएंट ऑफ ए स्केलार फील्ड नौचे आउ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड नौचे। सो डाइवर्जेंस और ग्रेडिएंट बुझा पूर्वर आमको जानवा को पड़ो जे स्केलार फील्ड कौन आउ वेक्टर फील्ड कौन। आम जाचे स्केलार और वेक्टर विषय आम जाचे व्हाट इज ए स्केलार physical quantity which have got magnitude only are called scalar, and physical quantities or measurable quantities which have got both magnitude as well as direction is called vector. जो physical quantity बा measurable quantity रा direction अच्छी ताको आमे वेक्टर कहूचे। जमती कि आमर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हूँ गोटे वेक्टर क्वांटिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जोड़ा हूँ गोटे स्केलार क्वांटिटी। कहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आम जो बाहर करुचे आम केमती कैलकुलेट करुचे ना इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। आम गोटे चार्ज नौचे इनफाइनाइट रू टू ए पॉइंट जी आम वर्क डन कले दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जेहेतु आमर वर्क गोटे स्केलार क्वांटिटी से आम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टाको स्केलार क्वांटिटी नौचे। किंतु इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जिते आम बाहर करुचे आम केमती बाहर करुचे ना इन टर्म्स ऑफ फोर्स। आम जदि गोटे सोर्स चार्ज नौचे सपोज दिस इज योर सोर्स चार्ज एंड दिस इज योर टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज रे आम जी फोर्स पाउचे से फोर्स रू आम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर करुचे। फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज F डिवाइड बाय Q से आम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बाहर करुचे बा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर करुचे। जेहेतु फोर्स रो डायरेक्शन रोची सो वी आर टेकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलार और वेक्टर विषय आम जाचे बट व्हाट इज ए फील्ड आम क्या कहवा। सपोज आम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये जगह बाहर करवा ये पॉइंट रे बाहर करवा। सपोज दिस इज एनी पॉइंट P, दिस इज एनी पॉइंट सपोज P। आम P पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर करवा। सपोज दिस इज योर सोर्स चार्ज एंड P पॉइंट रे देयर इज नो चार्ज एट दिस पॉइंट। सपोज देयर इज नो चार्ज ये जो Q टेस्ट चार्ज आपको मन कर बाहर को नहीं जावा। सो this point is a vacant one, there is no charge at this point P. So in the absence of this test charge, what is at the point P? जिते बड़े ये जो Q स्मॉल q टेस्ट चार्ज टा नहीं ताले P पॉइंट रे कौन अच्छी ना ये जो सोर्स चार्ज रो इफेक्ट अच्छी। जदि भी ये टेस्ट चार्ज नहीं ताहले मध्य P पॉइंट रे सोर्स चार्ज रो इफेक्टा अच्छी एवं जो इफेक्टा अच्छी आमे सही जगह रे बा सही P पॉइंट रे आमे कहबा Q चार्ज रो फील्ड अच्छी। तेणु करी जेते बड़े आमे ए जो P पॉइंट को ए टेस्ट चार्ज आणुचे बा फील्ड को आणुचे सेते बड़े आमे सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज मध्य रे गोटे फोर्स आमे जनरेट कर पाउचे बा फोर्स गोटे पाउचे एवं से फोर्स रु आमे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केते कैलकुलेट करुचे। सो एटा होची हमर फील्ड कांसेप्ट। तो आमे वर्तमान डिस्कस करिवा ताले स्केलार फील्ड कोन और वेक्टर फील्ड कोन। व्हाट इज स्केलार फील्ड एंड व्हाट इज वेक्टर फील्ड और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलार फील्ड and vector field. So first we will discuss about scalar field. First we have discussed that the field means the effect of the, suppose here in case of electric field, the effect of the source charge. Here the effect of the source charge or the space here is affected
by the source charge. So you have a electric field here. In the absence of charge also you have a field here. But what is a scalar field? Suppose when you calculate the electric potential, how you calculate the electric potential at this point P? You have to take some test charge, suppose say small q, from infinity to this point. You take the test charge like this. You may take the source charge in a straight way, or you may take the source charge, test charge in a curved way like this. It does not matter. In any way you can bring the test charge from one point to another point, and the amount of work done is equal to the electric potential. So the amount of work done means here work done is a scalar quantity. That is why in the field here the space the space due to this source charge, this space is governed by or characterized by a scalar quantity, that is the work done. So a region in space which every point is characterized by a single value of scalar quantity is called a scalar field. For example, your electric potential. We have considered any point in the space of electric field, and that point is characterized by a single value of scalar quantity, that is the work done. That is why electric potential here is called a scalar field. But you take the case of electric intensity. Electric intensity, it will be a vector field. Suppose electric intensity here will be a vector field. Why? Because the space or the point here is characterized by a single value of vector quantity. How you calculate the electric intensity at this point P? You have to find out the force between this test charge and this source charge, and the force is a vector quantity. That means this point is characterized by a vector quantity, that is force. So a region in space whose every point is characterized by a single value of vector quantity is called a vector field. For example, your electric intensity. In this way you can define a scalar field and a vector field. First you consider the space. Suppose here we have considered a point in the space, and first you consider the space. प्रथमे से स्पेस को आम कंसीडर करवा, एवं से स्पेस रे जदि आमर जो क्वांटिटी आम नौचे सेटा जदि गोटे स्केलार क्वांटिटी हम ताहले आम ताकू गोटे स्केलार फील्ड बोली कहवा। आ जदि से स्पेस रे आम गोटे वेक्टर क्वांटिटी नबा ताहले ताकू आम गोटे वेक्टर फील्ड कहवा। एई फील्ड को आम गोटे वेक्टर फील्ड कहवा। दैट मीन्स एटी मु गोटे पॉइंट नहीं, बट जदि आम गोटे 3 डायमेंशन नबा, तार एक्स एक्सिस रहिबो, वाई एक्सिस रहिबो, जेड एक्सिस रहिबो, तो आम ताको ए भलिया आम गोटे एनी रिजियन फील्ड जितेबाला आम कहूचे आम गोटे स्पेसिफाइड रिजियन नौचे, आम गोटे पर्टिकुलर पॉइंट नौ ना, आम गोटे रिजियन नौचे। एठी आम गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे फोर्स कैलकुलेट करिकी देखौचे जेतेबेले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर करुचे बा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाहर करुचे। सो एठी आम जेतेबेले एई दो दुटा पॉइंट को जोड़िबा, सपोज आर नबा, देन इट इज ए आर वेक्टर नहीं परिबा, एठी मध्य आर वेक्टर नहीं परिबा, किंतु एठी आर वेक्टर रो जो कहा पर डिपेंड करुची ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर डिपेंड करुची। तेणु करी आम एठी लिखिबा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यू इज ए फंक्शन ऑफ u r. That means here the position vector r, here the position vector r is the position vector, and the scalar field is your electric potential. And here you write, suppose the electric intensity, you write E, that will be equal to the vector E and the position vector, suppose say r, like this. You represent the vector field for the electric intensity like this, and the scalar field for the electric potential like this. So before going to learn about
del operator, then gradient of a scalar field or divergence of a vector field. We will discuss it in the next class, next video. You should know about two things. One is your scalar field, another is your vector field. And what is a scalar field? A region in space whose every point is characterized by a single value of scalar quantity is called a scalar field. For example, electric potential. Similarly, vector field means a region in space whose every point is characterized by a single value of vector quantity is called a vector field. For example, electric intensity. In the next video, we will discuss about del operator. Thank you.